Hello and welcome to Swaraaj IS. आज आम मॉक टेस्ट 4 रो हमर जोटा कि इंडियन इकोनॉमी पर थिला तार क्वेश्चन रो आंसर डिस्कस करिबा किछिटा जो क्वेश्चन आंसर सब हमर OCS एग्जाम को नेकी ओडिसा सिविल सर्विस एग्जाम को नेकी डिजाइन हेछि। चलो देखिए प्रथम प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओडिसा बजट 2025-26 supports the गोपबंधु जन आरोग्य योजना to improve healthcare access for Odisha's residents. Which two of the following statements are correct about the Gopabandhu Jan Arogya Yojana? Statement 1 reads, it provides healthcare coverage or health coverage to economically weaker sections. Statement 2, it is integrated with the National Ayushman Bharat scheme. Statement 3, it focuses only on urban healthcare infrastructure. Statement 4, it excludes senior citizen from coverage. चारिटा स्टेटमेंट अछि। एक क्वेश्चन टा ओडिसा बजट ऊपर आछि 2024-25-26 ओपीएससी इकोनॉमिक कोटी के नेग्लेक्ट करके आछि सब, किंतु लुकिंग एट द इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन और रिफॉर्म जोटा के ओपीएससी अडॉप्ट करूची हमें एभलिया क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि पारिबा जोटा कि गवर्नमेंट रो स्कीम ऊपर नुवा गवर्नमेंट रो नुवा स्कीम सो बनिछि टिके चेंजेस हेछि तो ता ऊपर निश्चय से माने फोकस करि पारंती। और सेकंड जिंस हला कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे ए दिटा हम स्टेट रो भी और सेंटर रो भी बहुत जरूरी। आमे जो टेस्ट सीरीज डिजाइन करिछु ए ऑल राउंड जिंस को देखि किना टेस्ट सीरीज डिजाइन करिछु। तो प्रथम प्रश्न रो ऑप्शन होची 1 and 2, बी होची 1 and 3 ओनली, सी होची 2 and 3 ओनली एंड डी होची 2 and 4 ओनली। तो व्हिच ऑफ द अच्छा क्वेश्चन गाइड लिखा है नहीं कि व्हिच ऑफ द अच्छा लिखा है व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द गोपबंधु जन आरोग्य योजना। ए भीतर को दिटा ठीक अछि। देखो इट प्रोवाइड्स हेल्थकेयर कवरेज टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इंटीग्रेटेड द आयुष्मान भारत स्कीम सहित इंटीग्रेट हे गला। एटा ही जो प्रीवियस गवर्नमेंट टाइम रे हमर थिला बिजू स्वास्थ्य समथिंग थिला राइट। एटा तो गोटे कार्ड मिलथिला ताकू नुवा गवर्नमेंट चेंज कर बिना गोपबंधु जन आरोग्य योजना कर देले। ओके तो आर आंसर कोड हबो। अच्छा ऑप्शन सी कौन पूछ ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 पूछ इट फोकसेस ओनली ऑन अर्बन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो नॉट ओनली ऑन अर्बन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रादर अर्बन रूरल बोथ। और स्टेटमेंट डी कोची स्टेटमेंट 4 कोची इट एक्सक्लूड द सीनियर सिटीजन फ्रॉम कवरेज ना एमती काई हबो। तो एटा कॉमन सेंस भाबरे हम एलिमिनेट कर दी परिबा। तो आंसर हबो 1 and 2। ओके करेक्ट पूछाछि ना तो करेक्ट कोन बैठी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें again Odisha economic survey ऊपर गोटे बजट तला गोटे इकोनॉमिक सर्वे। Odisha's fiscal management has been prudent, maintaining a low debt to GSDP ratio as per the economic survey 2024-25। recent economic survey हमें कहि परिबा जोटा कहूची ओडिसा रे डेट टू जीडीपी रेशियो टा और जीएसडीपी रेशियो टा कम अछि। which of the following statement are correct regarding Odisha's fiscal health in 2024-25? statement 1 कहूची Odisha's debt to GSDP ratio is 13.2%, the lowest among major Indian states. Statement 2 कहूची Odisha's debt to GSDP ratio exceeds the 25% threshold set by FRBM Act 2005. Statement 3 Odisha's Odisha tops the fiscal health index FHI 2025 which scores 67.8. And last statement कोची Odisha's public debt increased to rupees 50,000 crore in 2024-25. See, these questions are derived जोटा क्वेश्चन तैयारी हेछि from the economic survey of last year or this year। सेति पई ना किछि डिफिकल्ट भी कहि परिबनि कि इजी भी कहि परिबनि बुला क्वेश्चन, किंतु एक्सपेक्टेड टू सिविल सर्विस रे एबुला क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करि पारि। ओके किछिटा क्वेश्चन टिके हाई लेवल रे बनै छि आ अनफॉर्चूनेटली फर्स्ट रहि जाय छि क्वेश्चन गुडा। देखो एटु कोटा ठीक करेक्ट पचारछि ना करेक्ट पचारछि देखि दो सब करेक्ट कि इनकरेक्ट पचारछि नहले हमर भूल हे जाय चांसेस है। ओडिसा डेट टू जीडीपी रेशियो हमर सबटु लोएस्ट अछि मेजर इंडियन स्टेट माना होते लोएस्ट अछि जेटा कि 13.2% व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एटा इकोनॉमिक सर्वे तुम पढि परिबो। ओडिसा डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सीड्स 25%। देखो एटा जदी ठीक है एटा तो हबनी केबे भी ठीक बुझिलो ताले एटा भूल हे जो थ्रेशोल्ड एफआरबीएम ना एटा तो भूल अछि। देखो 13.2% अछि को होछि तो 25% पे एक्सीड करिनी हमर वर्तमान ऋण टिके कम अछि बाकी स्टेट अपेक्षा। Odisha topped the fiscal health index FHI by 2025 score 67.8। बोधवे एटा नीति आयोग रो इंडेक्स थिला
ओके नीति आयोग रो रिपोर्ट थिला आ एटा भी करेक्ट अछि बिल्कुल गुड न्यूज़ कि ओडिसा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स भी हमरो भलो अछि आ फोर्थ होची ओडिसा पब्लिक डेट इंक्रीज टू 50,000 करोड़ ना एटा पाखा 90,000 प्लस अछि ओके 90,000 प्लस करोड़ अछि 90,000 क्रॉस करोड़ रु अधिकार होची तो एटा भूले जिवो तो हम आंसर 1 एंड 3 अछि पॉसिबल ओके तो ऑप्शन है डी एवढिया क्वेश्चन जब सॉल्व करिवार अछि ताहे तुमको सब गवर्नमेंट स्कीम प्लस हमरो इकोनॉमिक सर्वे बजट को खर्च करबार अछि स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन अच्छा 3 होची द हरोड-डमार ग्रोथ मॉडल सजेस्ट द ग्रोथ इज अच्छा हरोड-डमार growth model suggests that the growth is statement 1 option A directly related to savings and inversely related to capital output ratio statement B directly related to the capital output ratio and inversely related to savings statement C goes indirectly related to savings and capital output ratio so indirectly both will be or directly related to savings and capital output ratio the हरोड-डमार growth model हमर 5 year plan रे बिथिला ओके सेकंड 5 year plan रे बिथिला एटा जोठी कि हमर हेवी जोठी इन्वेस्टमेंट अधिका हेतिला हमर हेवी इंडस्ट्रीज पर प्रति बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रति बहुत इन्वेस्टमेंट हेतिला तो ऑप्शन जो देखिबा डायरेक्टली रिलेटेड टू सेविंग एंड इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो मानेला कि आमे केते इन्वेस्टमेंट करछु कैपिटल रे आ केते आउटपुट आछि एटा सब बोले जदी अधिक कैपिटल इन्वेस्ट करछु आउटपुट कम आछि ताले कोन नेगेटिव हि जिवो आ डायरेक्टली सेविंग अधिक कर तो एही ऊपर ही फोकस करथिला ऑप्शन 8 हो राइट आंसर तो एठी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहि परबा रिलेटेड कहछि एठी ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवढिया क्वेश्चन पचारि परिबे 5 ईयर प्लान ऊपर यूपीएससी रो नजर अछि तो एवढिया क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर परिबा ओके सो आंसर इट होछि ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैच लिस्ट ए लिस्ट 1 with list 2 and choose the correct answer using the code given below the list देखो हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है एटा मैच करबा अछि लिस्ट 1 पढुछि कि ए रे होछि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बी होछि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट सी होछि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और डी होछि एमिशन गैप रिपोर्ट ओके चारिटा रिपोर्ट बेसिकली एटा इंटरनेशनल रिपोर्ट चैप्टर दिया है एटा पढे आगु पढिछि बहुत थर रिपोर्ट विषय किंतु मैच द फॉलोइंग पढि मैच द फॉलोइंग नबार कारण होछि कि थरे हम चारिटा रिपोर्ट कवर हो जिवो लिस्ट 2 होछि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 3 होछि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और 4 होछि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इजी अछि क्वेश्चन ता किंतु रिपोर्ट और इंडाइसेस भी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ओसीएस तो हमरो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के दिए हमरो यूएनडीपी एटा जानथियो समझते कोह जानि तो इजी क्वेश्चन भाई एटा किछि डिफिकल्ट नै खाली देखाउ छ लंबा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आगु पढि छिटा आईएमएफ दिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एटा हमरो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट से ट्रेड एंड डेवलपमेंट दिए अब लास्ट होची एमिशन गैप रिपोर्ट के दबो एनवायरनमेंट प्रोग्राम बहुत इजी क्वेश्चन पिला कहते हैं बोले यदि आप भीतर को पचाले जाएगी ताहले टिके डिफिकल्ट हे पाए तो आंसर कोन होबे कि हमरो 3 1 ओके 3 1 4 2 अच्छी किछि 3 1 4 2 3 1 4 फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक अछि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझि गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म post 1991 includes the introduction of prudential norms and the Narasimhan committee recommendations देखो नरसिम्हन कमिटी रिकमेंडेशंस विषय रे पचार जे 1991 रे जो एनईपी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आस्तिला कि एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आस्तिला on the recommendation of Narasimhan committee which of the following was the key recommendation of Narasimhan committee in 1991 अच्छा कोड इधर की रिकमेंडेशन थिला तो ऑप्शन ए रीड्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर banks ऑप्शन बी को जी रिडक्शन ऑफ एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन सी को जी prohibition of foreign banks in India and option D reads increase in government ownership of bank ओके देखो न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थिला हमर लिबरलाइजेशन ऊपर प्राइवेटाइजेशन ऊपर ग्लोबलाइजेशन ऊपर
सेति पे फॉरेन बैंक को प्रोहिबिट के करा ग्लोबलाइजेशन को हमर हेटा प्रमोट करथला तो एटा तो केबे भी होबनी एलिमिनेट कर देबा इंक्रीज इन गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ बैंक गवर्नमेंट रे प्राइवेटाइजेशन ऊपर थी तो गवर्नमेंट ओनरशिप काहे को याको हमें बाहर कर देबा नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्राइवेटाइजेशन बाय प्राइवेट बैंक्स तो एटा भी तो अगेंस्ट गला तो एटा भी होबनी फोर है रिडक्शन ऑफ एसएलआर एंड कैश रिजर्व रेशियो जेहेतु मार्केट ओपन हला प्राइवेट सेक्टर आसी गले इन्वेस्टमेंट हला अधिका एटी कोन होबा हम सब बडे बैंक पाखरे सफिशिएंट कैश दरकार सो दैट ये लिक्विडेट कर परिबो ताको नजर रखिकी ये एसएलआर को रिड्यूस करिया पे और कैश रिजर्व रेशियो को हमरा रिजर्व रिड्यूस करिया पे कोन करते रिकमेंड करते 40% टू 10% करिया पे निकले बट ए रिकमेंडेशन ता बोध होय केबे इंप्लीमेंट हेई नथिला किंतु हम जानि रखबे कि एटा होय राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन economic reform have contributed to India's GDP growth but have also been criticized for increasing income inequality obviously जो इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ हुए तबले कोन हो तमर जीडीपी तो बढ़ी जिवो किंतु इनकम इनइक्वालिटी देखियो मिले नॉर्मली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी को टारगेट करी क्वेश्चन बनाए तो मु भी केतरा क्वेश्चन बनाई छी हमर स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए अछि से कोची दे लेड टू a decline in foreign direct investment एफडीआई डिक्लाइन हो बोली कोची ओके जो 1991 आसला परे हम एफडीआई डिक्लाइन हला ना इंक्रीज हला बुझिबा स्टेटमेंट बी कोची और ऑप्शन बी कोची दे फेल टू reduce poverty levels in India poverty levels को reduce करिया पे से माने फेल ही गले सी कोची they contribute to regional and income disparities okay and D कोची they eliminated all public sector enterprises प्रथम तो जेतबे 1991 आसिला हमर सेतबे प्राइवेट सेक्टर को हमर गुरुत्व दिया तार माने नुहे कि सब पब्लिक सेक्टर एलिमिनेट हो गला एटा तो भूल है जिवो एटा कोन मिक्स्ड इकोनॉमिक था पब्लिक सेक्टर एबे भी अछि पीएसयू तो एबे भी अछि ना हमर गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट कंट्री तो पीएसयू सब अछि जेम एचएल ही गला जेम हमर एनएएल ही गला किबा हमर देखबा एचपीसीएल ही गला ए सब कोन हमर गवर्नमेंट रो पीएसयू गुडा तो एटा तो अछि एटा हमर एलिमिनेट हो जिवो they contribute to regional and income एटा देखबा they led to decline in एफडीआई इंक्रीज हेतिला डिक्लाइन हेतिला तो हम प्राइवेट को सपोर्ट करले एफडीआई को इंक्रीज हेतिला मार्केट ओपन करला ग्लोबलाइजेशन होला दे फेल टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स इन इंडिया पॉवर्टी लेवल रिड्यूस तो निश्चय करछन ना जेंतु हमर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हेतिला हमर जीडीपी जदि ग्राफ देखिया ए बढ़िया बढ़ुतला ए बढ़िया बढ़िया स्टार्ट हेला एनडीपी पर 1991 पर तो एटा तो पॉवर्टी तो रिड्यूस हेई जी तो एटा ही भूल जिवो ए स्टेटमेंट देखो दे कंट्रीब्यूट टू रीजनल इनकम डिस्पैरिटी हां जेतेबेले हम प्राइवेटाइजेशन हम दो करि दोछ मार्केट जेतेबेले हम कैपिटलिज्म को प्रमोट करूछन जेतेबेले कोन हो इनकम इनइक्वालिटी ता जनरली देखिया पे मिलिबो ओके इनकम इनइक्वालिटी रीजनल इनइक्वालिटी देखिया पे मिलला जो माने प्राइवेटाइजर जो माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर करी चलले प्रॉफिट बनेबनी चलले प्रॉफिट करले आ जो गवर्नमेंट वाला किछि किबा जो माने जो मानकर जो पुअर अछंती कि रिलेटिवली मिडिल क्लास से माने हेती रही गले तो एटा होछ हमर राइट आंसर एलपीजी रे गोटे हमें एटा गोटे क्रिटिकल पॉइंट बोली हमें नहीं परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विथ दैट डिस्क्रिप्शन अच्छा एटा देखो कॉलम ए और कॉलम बी दिया है छी आ किछि स्टेटमेंट दिया है छी ता सहित मैच करिया पे को अच्छा स्टेटमेंट 1 कॉलम ए रे पढ़ दिया सब कॉलम ए रे चारटा जाक पढ़बे तापर बी पढ़ कॉलम ए रे कोन कहै छी पॉवर्टी लाइन पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर दुई नंबर ता कहै छी हमर कोन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर्ड पुअर disguised unemployment a new one cyclical unemployment like during a recession basically तीन प्रकार unemployment बेस देला तो ऑप्शन जो कॉलम बी रे डेफिनेशंस लिखा है हम डायरेक्टली मैच कर देला स्टेटमेंट ए कहै छी कोन the situation where more people are employed than needed okay a level of income and expenditure below which a person okay एटी देखो टिके एटी कोन ना हमरो स्टेटमेंट छाडी जाई छी बट ए क्वेश्चन दा द लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिलो व्हिच अ पर्सन डिजर्व और समथिंग अच्छे एटी तो एटा को हम रखि दिबा होल्ड रे बाकी स्टेटमेंट बोलबा टाइम लैग बिटवीन जॉब एंड समवन इज सर्चिंग फॉर ओके एंड स्टेटमेंट डी व्हिच अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द जॉब बिजनेस साइकिल ओके देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मन रख सब बोले जते बेले गोटे काम रे अधिका लोक ताटू नियोजित हेचंती जोटी जेकी सपोज गोटे काम रे 3 जण दरकार सेठी जेकी 6 जण काम किबा जणे दरकार सेठी 4 जण काम कर तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहा जाय तो हमर एग्रीकल्चर फील्ड सेंटी होतला ये बेबी टिके देखता हुए
ओके जेतेबेले हम जेतेबेले हमर गोटी फील्ड रे जाकी घरे स्वामी स्त्री छुआ समस्त काम करंती जेतेबेले कि समस्त अलग अलग जॉब करि परथांते ताको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहा जाए तो आमे देखबे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ए सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड स्पेशली इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ओके एटा एग्रीकल्चर वर्तमान देखिया पे मिलची तो आंसर कोन हो एट हम जोड़ देबा तीनटा ए संगे देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट केते होची सपोज गोटे जॉब तार जाईची नेक्स्ट जॉब खोजिला फिर जे गैप रहउची सेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहा जाए तो ऑप्शन सी द टाइम लैग्स बिटवीन जॉब्स व्हेन समवन इज सर्चिंग फॉर इट इज आवर सी से लिंक क्लियर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कोन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल जतल फ्लक्चुएशन हो बिजनेस ता उठे तळे हुए तो ए टाइम रे एम्प्लॉयमेंट थाए एटी समस्त बाहर कर पुनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए पुनी बाहर कर दिए एटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहा ओके तो एटा हमर आज के जोड़ देबा नेक्स्ट एटा रहला poverty line particularly in agriculture the level of income and expenditure below which a person lies okay or belong to तो हमर कोन बॉक्स एटा 1 से तो जोड़ी जीवो तो हमर कोन हला एटी बी सी ए डी बी सी ए डी अछि के बी सी ए डी देखो लास्ट ऑप्शन ता ऑप्शन है तुम्हारा डी बुझी गलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन a country experiences a trade surplus का बोलते देखो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस बेसिक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन छोटे छोटे कांसेप्ट जार क्लियर अछि से इजीली कर दो its import exceeds its export its export exceed its import its export and import are equal and it has negative balance of payment country experience a trade surplus तो country कोटा अछि suppose this is India suppose this is India अछि ना देखो मते तो भलो मैथ जान नहीं एमती अछि हला तो एडी कोन इंडिया ट्रेड कला बाहर कंट्री संगे जेतबेला हम इंडिया अधिका एक्सपोर्ट करी ओके अब कम इंपोर्ट करियो एटा होची इंपोर्ट कम करियो ताहले कोन हो इंडिया सबले सरप्लस बेनिफिट रहबो ट्रेड सरप्लस कहबो अधिका एक्सपोर्ट करियो कम इंपोर्ट करियो सेटा होची ट्रेड सरप्लस तो हमर कोठा इट्स एक्सपोर्ट एक्सीड्स द इंपोर्ट ओके दिस इज द राइट आंसर डायरेक्ट हम खुदले किछ हमके दरकार नहीं किछ बिग्रे दरकार नहीं आंसर ऑप्शन बी होची राइट आंसर सीधा क्वेश्चन था एते किछ मुंडो भी लगा नेक्स्ट आउट concept बस बेसिक डेफिनेशन व्हाट डज एक्सचेंज रेट रेफर्स टू एक्सचेंज रेट माने कोन ओपीएससी को नजर रखी किछरे क्वेश्चन बनाई छी जेहेतु ओपीएससी तो इकोनॉमिक सबले नेग्लेक्ट करे मु निजे डेवलप करछि किछरे क्वेश्चंस होपफुली ओपीएससी एतर भलो भलो क्वेश्चन बनेबो इनका दिके अच्छा ए कोन कहूची द प्राइस ऑफ ए कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एटा एक्सचेंज रेट की देखिबा स्टेटमेंट बी कहूची द प्राइस ऑफ one country's currency in terms of another country's currency. Statement C reads the interest rate set by the central bank. And option D, the level of country's foreign exchange reserves. Okay. Forex reserve level taku हम exchange rate तो केबे कहबे ना forex reserve बोली कोन होबे forex बोली कहबे इट हबनी हमर आंसर सी देखियो द इंटरेस्ट रेट सेट बाय द सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट सेट करछि ताको हम सीआरआर कहबा ओके तो एटा भी हबनी then the price of country's currency in terms of gold eta bhi to hobani to answer hobo b the price of country's currency in terms of country another country's currency eta exchange rate okay amar currency is rupees okay ya is dollar तो डॉलर तुलना रुपी रो वैल्यू टा होची हमर एक्सचेंज रेट 1 डॉलर इक्वल टू सपोज 83 रुपीस तो एटा होची तार एक्सचेंज रेट तो एटा आंसर हो बी चित्र बुझिबार नै किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन नै The economic development proceeds, income inequality tends to follow a dash curve. देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड इनकम इनइक्वालिटी जेतबे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए ओके एटा कोन है छी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है छी और एटा होछ हमरो इनइक्वालिटी इनकम
ओके तो ए टाइम रे हमर जो ग्रोथ ग्राफ ता थाए सेटा कोभले थाए कन्वेक्स थाए ना हमर इन्वर्टेड यू शेप थाए कि एल शेप थाए कि एस शेप थाए कोन थाए कि कहबो जल्दी को तो याकू बेसिकली जो हमरो अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ रो जो कर्व अछि एक तरफ बजे कजनेट कर्व ओके की कजनेट सम डिफरेंट सब प्रोनाउंसिएशन करते कजनेट कर्व को हम कहछि इनइक्वालिटी बढ़े तो इनकम ग्रोथ बढ़े सेते बेले हमर इनइक्वालिटी भी बढ़े हेले आफ्टर सर्टेन कंडीशन बराबर हो जाए और पर सेटा धीरे धीरे स्टिक कर सब बेले कोन हो हमर इनकम बढ़े इनकम जब ग्रोथ होय कंट्री पर इनइक्वालिटी भी बढ़े और धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ला पर सेटा हमर इनइक्वालिटी भी कम जाए हैला तो इट इज इन्वर्टेड यू शेप हैला इन्वर्टेड यू शेप अछि आंसर होचे बी हैला inverted U shape and this is by coordinate देले आगो coordinate curve बोली कहला ओके सो एमती हम सब जगह लाफेट कर्व coordinate कर्व सब देखि कि जीव जति कर्व अछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि लास्ट क्वेश्चन एटा डिस्कस कर दबा व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंट्री इन फॉरेन financial assets statement B reads investment made by company or individual in one country into the business of another country. Statement C reads loans from foreign governments to domestic